माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी एवं विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी का भी स्वागत करता हूँ। संस्कृति कार्य मंत्रालय के सचिव श्री उमंग नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव अरुण नरूला जी, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणेश चावला जी और संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदी जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रारूप इस प्रकार होगा। सर्वप्रथम संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री अरुणेश चावला भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीपीटी प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी अपना संबोधन देंगे। माननीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी भी आपको संबोधित करेंगे और तत्पश्चात माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपना संबोधन देंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। अब मैं संस्कृति सचिव श्री अरुणेश चावला जी से निवेदन करता हूँ कि वे पीपीटी प्रस्तुत करें। Honorable Ministers and our friends from the media. As my colleague just mentioned, Government of India has decided to commemorate the 75 years of the adoption of the Constitution of India in a big way. Next. As you know, this year marks the 75th anniversary of the adoption of our Constitution, and Government of India is commemorating this occasion with a year-long celebration across the country starting on the 26th November 2024. Next. The focus of this initiative is to highlight the foresight of the makers of our Constitution and the tremendous effort that has gone into making what we today know as the Constitution of India. Next. The celebration and the commemoration of the 75th year will give an opportunity for the citizens to appreciate the calligraphed version of the Constitution. Normally, we get to see the books that are sold on the shops, and that is what we get to read in schools. The website will display the calligraphed version, which is the original version of the Constitution. We will also make true copies and display it prominently in every state capital. In addition to that, the art and calligraphy of the Constitution has been researched on this occasion by the experts in the Ministry of Culture, and that booklet will also be issued on this occasion, will be available on the website, and will also be part of exhibitions all across the country. This occasion will give us an opportunity to be aware of the full scale and scope of this visionary documents. The citizens will be able to read the preamble, upload it on the website, and earn a certificate. And in that process, connect with the heart and soul of our Constitution. We'll also celebrate the dynamic nature of the Constitution of India and how it has helped India evolve as a polity, as a society, and as an economic powerhouse. Next. Next. Friends, the activities during this year-long celebrations have been divided into 4 parts, 4 themes: Preamble of India, Know Your Constitution, the making of our Constitution, and the glory of our Constitution. Next. First, the mass reading of the preamble.
people across the country will be able to read the preamble to our Constitution in both online and offline modes as per their convenience in the language of their choice. And this I will explain very briefly how this will work, what is the campaign website, and how everyone sitting where they are can do it on their phones, laptops, computers, whatever they have access to. The rollout of the preamble will be done in all panchayat offices, in schools and other prominent places. Next. The second theme is Know Your Constitution, and for this we'll be organizing special sessions and assemblies in all schools, colleges and institutions. There will be Gram Sabhas in every village, particularly the SC/ST dominated villages. There will be seminars and panel discussions, and for everyone to participate in competitions, the MyGov website, which houses all such competitions, will have a special page for this commemoration where quiz, essays and other competitions on the Constitution will be put out. Next. We are using this commemoration to do more research into the making of the Constitution. As you know, Constitution has already been translated into many languages. Tomorrow, Her Excellency the President of India will also inaugurate 2 copies of the Constitution in Sanskrit and Maithili. All the debates of the Constituent Assembly will be put on the campaign website, and during the course of the year, these debates will be translated into the scheduled languages in the Constitution. The reports of all the committees which went into the making of our Constitution, all these reports will be made available on the campaign website for people to read, understand and research. We'll also be organizing model constituent assemblies in colleges and institutions on the pattern of model United Nations that most academic institutions know of. Next. Friends, this occasion will also be used to commemorate and celebrate the people involved in the making of our Constitution. This will include the prominent members of the Constituent Assembly, the members of various committees, their chairpersons, the members representing various segments of our society, particularly the women members, and there will be events organized at their birthplace and the landmarks in their journey, and we would also be looking and researching into their thoughts, their ideas, and coming out with dedicated outputs and brochures and write-ups on what they thought and envisioned a modern India to be. Next. As you know, these are the prominent constitution makers whose effort, whose vision, whose ideals went into the making of our Constitution. There are many more. In each state capital, tomorrow the functions, ceremonies will be organized where they will remember not just the makers of Constitution at the national level, but the makers of the Constitution which come from their state, and they will commemorate during the course of the year the places which are connected to the makers of the Constitution, including the women members of the Constitution. Next. The fourth theme is the glory of the Constitution. The Gram Sabhas will be organized in every village, special Gram Sabhas, to read the preamble, to highlight the Constitution, including fundamental rights and fundamental duties. There will be a special fortnight of events around the Baba Saheb's birth anniversary, and this will be organized at all the prominent places connected with his life, like Mao, Mumbai, London, and Delhi. There will be Swabhiman Yatras organized by the volunteers throughout the country. As you know, the first, the Constitution run was organized today morning, in which the Honorable Ministers took an active part. Next. Friends, tomorrow will be a grand celebration in the Central Hall of Parliament, which will be led by Her Excellency the
the President of India and our Honorable Prime Minister. And on this occasion, there will be a mass reading of the preamble. A special coin and stamp will be released. The books prepared by Ministry of Law and Justice on the making of the Constitution and the art and calligraphy of the Constitution, a special booklet will also be released to highlight the effort of those artists who worked very hard to produce the beautiful Constitution that we know today. Next. This is just a glimpse on this special project called Art of the Constitution, which has been successfully completed and will be unveiled tomorrow. Next. I'll just end with a brief introduction of the website, the campaign website, and where everyone, the mass website where everyone will log in. It is simply called Constitution 75. You can just type constitution75.com on your Google or the search engine on your phone, laptop, and you will land straight onto this website. It will be the first entry on the web page. The website will look like this: Hamara Samvidhan, Hamara Swabhiman. Next. And this website will have the Constitution available in various languages. It will have the preamble in all scheduled languages. It will also have the debates of the Constituent Assembly, and it will also have the reports of the various committees. All this has been obtained, researched, dug out, and will be on display tomorrow. Next. Friends, this is what the landing page will look like. And if you see below the Constitution, there is a button called Participate. And below the button is written, read the preamble and receive the certificate. So every citizen, when he types Constitution 75, this will come the first thing on the Google page. Just click on it. This is where you will reach. And on the first page on top, you will see this, and you will see that button which is called Participate. When you press that button, next, you will come on this page, and this page gives you 4 simple steps. Enter your details, just your name, where you are. Record your video, then a preamble will come. You have the choice to select the language you want to read it in. Select the language, read the preamble. It will record you reading the preamble. Step 3, press the button, just upload it, and you can download a certificate individualized to your having participated in this great commemoration. Next. This is what it will look like when you enter your name and page. So that's all you need to enter. There is no login, nothing. You just press the button, a camera screen will appear. You select the language, you read the preamble in your language, it will record it. Just press the button, it will upload, and you download the certificate. Next. Thank you very much. हमारे चावला साहब ने जो चीज़ें बताई उसमें जो ऐड करने लायक मुझे विषय लग रहा है वो ये है कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर के संविधान का सम्मान करना और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब का सम्मान करना, ये उनके कार्य पद्धति का हिस्सा रहे हैं। आपको एक डेट याद दिलाता हूँ, 19 नवंबर 2015। इससे पहले इस देश में 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि ये दिवस मनाया नहीं जाता था, ये कानून दिवस के रूप में, जिसको हम लॉ डे कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कोई फंक्शन हो गया या कहीं और किसी हाई कोर्ट में, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें लिखा रहता है कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ये निर्णय लेती है कि आने वाले समय में
26 नवंबर का दिन प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण निर्णय था नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद अभी आपको जो 75 years of the adoption of the Constitution in India is a very big event. हमारे लिए एक कुछ निश्चित की बात है कि हमारा समय में हम लोगों को भारत के संविधान का 75 वर्ष पूरा होने पर पार्लियामेंट में इवेंट में हिस्सा लेने के लिए मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के कल उद्बोधन होगा और दोनों हाउस के लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स का जॉइंट सिटिंग संविधान सदन में होगा और उसमें 75th years of the adoption of the Constitution of India का सेलिब्रेशन यहाँ दिल्ली में होगा और साथ साथ में देश में हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम कई जगह में किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसी सदन में बैठेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिटिंग हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, इसलिए ये ऐतिहासिक पल है। मैं मानता हूं कि इसमें सिर्फ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का ये इवेंट नहीं है, ये हर एक भारतीय, हर एक भारत के नागरिक सबको मिल करके संविधान दिवस में शरीक होना है, दिल से मानना है और प्रियम्बल को पढ़ना है। ये महत्वपूर्ण बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा संविधान 26 नवंबर। धन्यवाद मित्रों। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के 75 साल पूरे होने के इस सौभाग्यपूर्ण अवसर पर वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल से जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे उनके इस कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए माननीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, सम्मानित अधिकारीगण और प्रिय पत्रकार बंधुओं बहनों, आप सबका मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आप सबको इस प्रेस वार्ता में आने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा आदरणीय किरण रिजिजू जी और आदरणीय अर्जुन राम जी ने कहा, हम सब के लिए एक सौभाग्य का अवसर है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिस तरह से वर्ष पर्यंत आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा हमने सेलिब्रेट किया, उसी श्रृंखला में संविधान जो हम सबका स्वाभिमान भी है, भारत का संविधान जो केवल मात्र एक कानूनी दस्तावेज होने के बजाय लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को हम सब के बीच में मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। उस दस्तावेज के 75 को अंगीकृत करने, जिसके आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसा पहचान बनाने में अपने सफल हुए, जिस संविधान के अनुरूप काम करते हुए आज 75 साल में भारत प्रगति करते हुए इस मुकाम पर आकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व भर में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। उस संविधान के 75 साल पूरे होने का अवसर सामान्यतः है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन एक देश और देश के लिए और एक ऐसा देश जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा हो और आने वाले हजारों सालों तक जो व्यवस्था इस देश में रहने वाली है, उसके लिए 75 साल का कालखंड कोई बड़ा अवसर नहीं, लेकिन निश्चित ही 75 साल का ये अवसर हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का अवसर अवश्य है कि पूरा देश इसके साथ में जुड़े, इस भावना के साथ में कि जो दूरदृष्टा संविधान निर्माता थे और उनकी जो दीर्घ दृष्टि थी, जो फारसाइटेडनेस थी, जिसके आधार पर उन्होंने संविधान की रचना की
न केवल रचना की अपितु विश्व का सबसे जीवंत और सबसे विस्तृत संविधान बनाने में ऐसी सफलता प्राप्त की। न केवल संविधान का निर्माण किया अपितु आने वाले भारत के भविष्य की आधारशिला भी उसके आधार पर रखी। पूरा देश उसके साथ में जुटे। इस दृष्टिकोण से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संविधान को अंगीकृत करने के 75 वर्ष के इस अवसर पर वर्ष पर्यंत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों का आगाज कल से होने वाला है। जैसा आप सबके सामने संस्कृति सचिव श्री अवनीश चावला जी ने अपने डिटेल प्रेजेंटेशन में जो बातचीत कही है, उनको बहुत ज्यादा नहीं दोहराते हुए